Hello, friends. The Central Board of Secondary Education (CBSE) has released the date sheet of Class 10th of the major subject for the Term 1 examination of 2021 and 22. Your exams are going to begin on 30th of November 2021. The first exam is going to be of social science. Then the second exam would be of science, that is on 2nd December. Then on 3rd December, we have the home science exam. All those who have the subject will have. Then on 4th December is mathematics standard and the mathematics basics exam will be there. Then the 8th of December 2021 is the computer application exam, that is on Wednesday. And on Thursday 9th December 2021 is the Hindi course A, course B. Those who have the subject will understand. And then on Saturday, there will be the last exam on 11th December of English literature or English language. Obviously, the English core that we call. And here the notes are given that we need to understand and read carefully. The date sheet of minor subject will be provided to the school separately. The examination of these subjects will start from 17th November 2021. जो माइनर सब्जेक्ट है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो सकते हैं और उसके लिए भी अलग से स्कूल में जो डेट शीट है वो दी जाएगी. And along with the above examination of class 10th, the examinations of minor subject of class 12th will also be conducted. तो इसी के साथ में 12th के एग्ज़ाम जो कि माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो भी कंडक्ट किए जा सकते हैं. And the duration of each paper of major subject will be of 90 minutes. Then the fourth point, we have the reading time will be given to us, that would be of 20 minutes instead of 15 minutes जो कि हमेशा दिया जाता है. सो इस बार 20 मिनट दिए जाएंगे पेपर को रीड करने के लिए. देन कीपिंग इन व्यू विंटर सीजन, ऑब्वियसली इन द मंथ ऑफ नवंबर एट द एंड एंड द दिसंबर द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड. सो इट्स अ विंटर सीजन टाइम. That is why the exam will start at 11:30 a.m. instead of 10:30 a.m. Then the further other desired information regarding examination will be provided in the admit card and by the school. The CBSE will also update schools, candidates and parents on examinations through various other modes फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो कुछ भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो स्कूल के द्वारा या फिर CBSE बोर्ड के द्वारा टाइम पे दे दी जाएगी. एंड देन द 7th पॉइंट सेज द इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया may not be taken into consideration बिकॉज आजकल हर एक यूट्यूब चैनल अलग अलग चीज़ें बनाता है एंड सो मैनी प्लेसेस सोशल मीडिया पे व्हाट्सअप हो जाए या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहती है. लेकिन CBSE कहता है कि जो सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन है उसको कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा. जो सर्कुलेशन आपको दिया गया है आपको इसी पे बिलीव करना है. एंड फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, अगर किसी इन्फॉर्मेशन की आपको ऑथेंटिसिटी जाननी है कि वो सही है या नहीं है, इसलिए इसके लिए आपको ऑलवेज you have to verify on the CBSE website. and यहाँ पे www.cbse.nic.in यहाँ पे दे रखा है and with the signature of Dr. Sanyam Bhardwaj, and he's the control of the examination. And this is just released before one day on 18th October 2021. So please do go through this date sheet of 10th class board examination and please do prepare for yourself very seriously. Thank you for listening.